Hi, good morning, ohayo gozaimasu, namaste. I am Chef Kumar from Tokyo, Japan. आज हम बनाने जा रहे हैं दिल्ली की रेस्टोरेंट्स की मोस्ट फेमस डिश पनीर बटर मसाला। यस, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप रेस्टोरेंट्स के टेस्ट का खाना घर पे कैसे बनाएं। इजी, क्विक एंड हेल्दी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ शेयर माय चैनल and subscribe. Thank you very much. बटर मसाला बनाने के लिए हमने लिए हैं 3 big tomato, around 400 gram, 1 onion, half for sauce and half for masala, 200 gram paneer, coriander roots, green chilli, ginger, green cardamom, cinnamon, dry chili, 25 cashew nuts, ginger garlic paste, fresh cream, butter and Desi Ghee. First we cut half onion, make it julienne for gravy. Or half onion for masala. क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले बोला था, पनीर बटर मसाला, so there is a 3 steps in that. Half tomato chopped for masala, and all rough cut for sauce. इंडियन खाना बनाने के लिए आपको पेशेंस की बहुत जरूरत है। 2 tablespoon देसी घी, रेड चिली, cinnamon, 4 green cardamom, roots, coriander, green chilli. Just saute.
थोड़ा सा, अगर ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो बाद में आपको पीसने में दिक्कत होगी। प्लीज चेक द क्वांटिटी। बस टमाटर उनमें डूबने चाहिए। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। जितने खड़े मसाले आप निकाल सकते हैं वो निकाल लीजिए। अब हम इसको पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने से पहले आपको इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। देखिए, हमने मसाले का पेस्ट बना लिया है ग्रेवी के लिए। अब हम इसको छानेंगे। अभी हमारी स्मूथ ग्रेवी रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे मसाला। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देसी घी 2 स्पून, ginger chop, now I'm going to chop onion करना है। Now I'm going to add ginger garlic paste, जब जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से भून जाएगा, उसकी खुशबू आने लगेगी, तब हम इसके अंदर हाफ टेबल स्पून पेपरिका पाउडर फॉर कलर, हाफ टेबल स्पून क्यूमिन, कोरिएंडर, है ना। ये अब हमारा रेडी हो गया मसाला, पनीर बटर मसाला। अब मैं जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो ऐड कर दूंगा। देखिए ग्रेवी का कलर, रिचनेस कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसे 5 से 7 मिनट हम पकाएंगे। ऑयल आ रहा है, इसका मतलब हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब हम थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे और इसको ऐसे हाथ से क्रश करके डाल दें।
After 3 to 2 minutes, we're going to add paneer. And now we will cook it for 5 minutes. Paneer butter masala is ready.